Hello everyone, I am Archana again here to meet you with another video of the same chapter. As you know, we are started the second chapter, that is environmental pollution. Under this chapter we had completed air pollution, then noise pollution, then climate change, soil pollution. Four major topics are completed. Now the fifth and the most important topic is solid waste management. But solid waste management given in very high content, बहुत ज़्यादा कंटेंट है. सो दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वी आर डिवाइडेड इनटू टू वीडियोस. सो दिस इज एन फर्स्ट वीडियो ऑफ सॉलिड वेस्ट. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ सॉलिड वेस्ट क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द चांसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो ये दिस टॉपिक शुड बी कवर्ड अप इन दिस वीडियो. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्ची, how waste can be management, then recycling, reuse and reduce, जो भी procedures है, that will be covered up in the next video. So in this video I'm started with the solid waste. First of all, the name itself suggests solid waste. Solid ऐसा जो waste है, ठीक है. सॉलिड वेस्ट बेसिकली टर्म एज अ वेस्ट फ्रॉम किचन, it is waste from the garden, it is waste from the industrial sector, it is waste from the electronic media, it is waste from the commercial complexes. So many things are included in solid waste. For example, the kitchen waste, after that the rough edges, cardboard, cans, glass, bottle, plastic, everything is included in the solid waste. In the simple form, solid waste means the waste which is collected from the houses, basically the kitchen waste or the animal and plant oriented waste. After that the man-made waste. And solid waste is the type of waste which is not liquid एंड विच इज नॉट गैशियस. ठीक है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो सॉलिड वेस्ट है, तो उसमें लिक्विड एंड गैशियस का कंटेंट आएगा ही नहीं. सो इट इज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल. Okay, now solid waste material means basically the waste material which is collected by the municipal corporation. उसको हम simple language में बोलेंगे कि waste which is collected from the municipal corporation, that is term as an solid waste. ठीक है, तो ये concept clear हो गया कि solid waste हम कौन से waste को बोलेंगे. Then the types, basically the types of solid waste. There are two types of solid waste. First one is the biodegradable solid waste and second one is non-biodegradable solid waste. So name itself suggests, always keep in mind कि जो भी terminology होती है, उसका जो नाम होता है, उसमें उसके सारे details आ जाते हैं most of the time. Science अगर हम पढ़ते हैं या science से related, bio से related, जो भी science related subject है, उसमें जो term होती है उसी में उसका नाम, उसमें explanation होता है. So biodegradable means that can be degraded biologically, that is biodegradable waste. So biodegradable waste में क्या आएगा sorry, basically the material which is which is the source from the plant source or animal source. So animal and plant source are biodegradable material. Biodegradable means by process of some microorganism it is degraded into simpler form. Simpler form में it can be converted into humus, it can be converted into compost or many other products, byproducts उसके आएंगे. So biodegradable material, it is nature given material हम उसको बोल सकते हैं, which is collected from the nature basically. And second one is the non-biodegradable content. Non-biodegradable मतलब cannot be degraded biologically, that is non-biodegradable content. ये हमने बहुत basic level से पढ़ा हुआ है, so there is no need to explain it very in very long ways. तो non-biodegradable means man-made material. Man-made material, it contains the aluminum foil, it contains the aluminum foils, it contains the packaging material, it contains the electronic waste, some machineries, it contains the plastic, it contains the polythene, it contains the glass, metal cans, everything is included in this type. So it is harmful for the environment. Non-biodegradable solid waste is always harmful for environment. It is because it is not naturally came into the environment and it is not naturally degraded. तो ये दोनों भी तरह से ये environment को harmful है, क्योंकि ये naturally आया भी नहीं है और naturally जाएगा भी नहीं, उसको process करना पड़ेगा. And natural
material जो biodegradable material है, that can be reuse or it can be converted to compost or some animal excreta or other things collected from the agricultural sources can be used for the biogas production. So biodegradable content is can be reused, recycle, or it can be converted into another form, but non biodegradable should go through the several processes. ये basic difference है biodegradable and non biodegradable में. After that, this is the basic classification, basic type of solid waste. After that, the types of solid waste. The types of solid waste में फिर से दो different categories की है, wet solid waste and dry solid waste. Again, wet solid waste means the waste which is collected from the houses, or basically the kitchen waste is wet solid waste. And dry solid waste जिसमें dry material आएगा, packaging materials are there, glass bottles are there, then the plastic water bottles जो मिलती है हमको मार्केट में, those are also included in the dry waste. उसमें आपका न्यूज़पेपर है या पेपर वेस्ट है, that is also in dry waste. So हमको क्या करना है, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज वी हैव टू यूज 2 डस्टबिन, सेपरेट डस्टबिन. ये हमको एनएमसी में भी बताया गया है, 2 डस्टबिन. सो ग्रीन फॉर द wet garbage and blue for the dry garbage. When we collected the solid waste separately, it is very handy for the municipal corporation to carry it, and that garbage should be, or solid waste should be further processed. Okay, after that some sources of, now this is clear. After that, sources of solid waste. Sources of, in this category, sources of solid waste, first one is the domestic solid waste. So domestic solid waste में क्या आएगा, आपका घर से निकलने वाला पूरा कचरा. डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट मीन्स सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसेस, बेसिकली फ्रॉम द किचन वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आएगा. आफ्टर दैट सम इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज जो खराब हुई है हमारे घर में, तो सो मेनी थिंग्स कैन बी कलेक्टेड इन द डोमेस्टिक वेस्ट. एंड नेक्स्ट वन इज द एग्रीकल्चरल वेस्ट. एग्रीकल्चरल वेस्ट में बेसिकली द क्रॉप रेसिड्यूज आर देयर, दैट इज ऑल्सो इन बायोडिग्रेडेबल. इट कैन बी यूज फॉर द कंपोस्ट प्रिपरेशन. बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे कंपोस्ट वहां पे प्रिपेयर हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज द commercial waste. Commercial waste means waste collected from the commercial complexes, commercial areas. So many papers are there, waste paper, packaging materials, cans, then so many things, plastic, so many things are collected from the commercial area. After that, the E-waste. E-waste means basically the electronic waste. Electronic waste collected from the several areas. Some industrial areas are responsible for the e-waste. Domestic areas are also responsible. Then the commercial areas are also responsible for the e-waste collection. After that, industrial waste. Industrial waste means the waste byproducts from the industries. Then the process, जो processing होता है किसी चीज को बनाने का इंडस्ट्री में, उसमें जो बाकी की चीजें लगती हैं, जो बच जाती है प्रोसेस में, दैट कैन बी टर्म एज एन इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो उसमें भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाता है सॉलिड वेस्ट में. After that, biomedical waste. Biomedical waste is very dangerous type of waste, because biomedical waste में क्या होगा, biomedical waste मतलब कहाँ से जो कलेक्ट हो रहा है, जो फार्मेसी से, हॉस्पिटल से जो कलेक्ट हो रहा है, that is an biomedical waste. लैब से कलेक्ट हो रहा, तो इसमें so many blood samples are there, then the operated organs may be sometime there, the dressings, then the cottons, the saline bottles, so many things are in this biomedical waste type. And this type of waste is very dangerous because it contains lots of pathogen. If it is dumped up directly to the side of hospitals or anywhere, it is very harmful for the humanity because it causes several type of infection. So all those 6 are the sources of solid waste. Now after solid waste, one more thing, how we can segregate the solid waste from our houses. तो दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी टू हेल्प द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. कहीं पे भी अगर हम हो, या हमारी प्राइम ड्यूटी है टू रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट. तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे उसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज 2 सेपरेट डस्टबिन, जो मैंने पहले भी बोला था आपको. 2 सेपरेट डस्टबिन कैन बी यूज फॉर दिस पर्पजेस. आफ्टर दैट, सेकेंड थिंग, यूज न्यूज़पेपर्स for the dumping of sanitary material. And next one is
डंपिंग ऑफ सैनिटरी मटेरियल जो भी है उसको डंप करने के लिए कवर दैट सैनिटरी मटेरियल इन द न्यूज़पेपर. आफ्टर दैट द वेट गार्बेज कैन बी कन्वर्ट इनटू compost. So related to that, I have posted one video how to prepare compost in a domestic level. घर में मैंने कंपोस्ट बनाया है, उसका वीडियो पक्का देखिए आप, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. हाउ कंपोस्ट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द वेस्ट से बना रहे हैं, एंड वेरी यूजफुल मटेरियल दैट कैन बी यूज इन आवर गार्डन, दैट कैन बी यूज इन आवर एग्रीकल्चरल फील्ड. सो प्लीज कीप वॉच इट. देन आफ्टर दैट बायोगैस का मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, सेम थिंग बायोगैस के लिए एनिमल एक्सक्रेट्रा एंड सम एग्रीकल्चर रेसिड्यू कैन बी यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन. So many things we can, small things we can do to segregate the waste, and basically you can separate the different things, recyclable, reusable, so it will be convenient to segregate the material. After that, how we can minimize the chances of solid waste production. First important thing is that ki solid waste can be reuse or recycle. Use a durable material. If you are purchasing something, so you can purchase in such a way that it should be durable. ज़्यादा समय तक चले ऐसी चीज़ें आपको खरीदनी है, तो वो कम से कम उससे गार्बेज प्रोडक्शन होगा या सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन होगा. आफ्टर दैट अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, अवॉइड पॉलीथीन्स. इफ somebody asks to carry the polythene or somebody give you something in polythene, so refuse to collect the polythene and use homemade bags, or you can carry paper bag or cloth bag while you shop. इसका भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर अ पेपर बैग, वेरी इजी एंड इजी मेथड से. सो वॉच इट कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ पॉलीथीन. ठीक है. आफ्टर दैट इफ सम मटेरियल इज देयर, प्रिपेयर अ कंपोस्ट. ये मैंने पहले बताया था, जो वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम हाउसेस है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. उसको कंपोस्ट में आपको कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट थिंग, रीयूज द मटेरियल. इफ यू हैव एनी ग्लास बॉटल, सो दैट ग्लास बॉटल इज वेस्ट नाउ. आपको फॉर एग्जाम्पल द बॉटल ऑफ केचप, तो केचप खत्म हो गया, तो वी आर इंटरेस्टेड टू डंप दैट बॉटल. सो रीयूज इट, पेंट इट ब्यूटिफुली एंड डेकोरेट इट एंड यू यूज एज ए फ्लावर वेस. ठीक है. सो वी कैन हैव small things we can do by our own to reduce the solid waste. ठीक है. So all those are the one more thing, you are the student, so related with you. If you have the last year copies, blank copies, so many pages are blank there, so tear that pages from the old copy and prepare a new notebook for your rough work. So you can reuse the paper and use the paper on both the side. एक साइड से लिख दिया छोड़ दिया ऐसा मत कीजिए, उसको reuse कीजिए, दोनों साइड से उसको यूज कीजिए. And print the material from both side. If you are using some notes or if you are using some question paper, question bank, तो वो प्रिंट आउट जब आप फोटोकॉपीज निकालते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, तो you are only using the one side. तो use it double sided, तो आपके 50% पेजेस वैसे ही बचने वाले हैं. So many things we can do from our side. And don't use the disposable type of pens. So पेन आप डिस्पोजेबल यूज कर रहे हो तो वो कचरे में जा रहे हैं, तो रीयूज जिसको कर सकते हो, रिफिल जिसको यूज कर सकते हो, ऐसे टाइप के पेन्स आपने यूज करने. छोटी छोटी चीज़ें हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक बेटर एनवायरनमेंट देने वाले हैं, और इस बेटर एनवायरनमेंट में जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है. तो प्रोसेस भी हमको कम कचरा करना पड़ेगा, हर चीज़ कम कम होती जाएंगी फिर, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हम इसके बाद में डेवलप करेंगे. दिस इज एवरीथिंग अबाउट द सॉलिड वेस्ट. इसके बाद में आपका पोर्शन आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाउ दिस सॉलिड वेस्ट कैन बी मैनेज. सो दैट विल बी कवर्ड अप इन द next lecture or in next video. So keep watching the videos and like it, share it. If you are not still subscribe my channel, तो please subscribe it. And सारे videos आपने देखने हैं जो आपके recycling के, मैंने compost आपको बोला, paper bag का बोला, so many things I have given there for the with respect to this reuse and recycling of material. So keep watching, आपको घर में try करना है. Thank you for watching.